नीतू जैन फ्रॉम द वायर। मेरा सवाल इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो बीएलओ होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि बीएलओ कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज़ इट आउटसोर्स टू समबडी एल्स जो ये काम करेगा? Or if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके। और उसको इलेक्शंस इन ऑल दी स्टेट्स वुड बी कंप्लीटेड बाय 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in it. Repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections, which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown, in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also,
more responsibility on us to prove this in these 5 elections because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा। आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है। आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं। लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं और उन केसेस को हम जब भी वहाँ जाते हैं रिव्यू करते हैं। आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है। दैट इज व्हाट इज द एक्सटेंट लीगल प्रोविजंस एज ऑफ नाउ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट उनके बारे में बताना वोटर्स को ये हमारा कार्य है। जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे ये उनका कार्य है। जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, देयर इज नो इलेक्टरल रोल रिलेटेड वर्क विच इज एवर आउटसोर्स टू एनीबडी। सो लेट अस क्लैरिफाई दिस ऑल ओवर अगेन। किसी के पास में भी, इट इज अगेन थ्रू यू, द एसएसआर वर्क इज स्टार्टिंग इन द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट द ऑफिशियल्स और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द BLOs. Nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLOs जाएंगे। और जहां तक आपने इलेक्टरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की, सो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्टैक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट। सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are working very hard, going house to house, doing a survey. And house to house survey is available to them, and there is a application, IT based, which is available to them, and all of them, by and large, using that application. And also what they do, they are maintaining a BLO register. It is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters, like how much should be the 18 to 19 cohort, how much should be the 80 plus cohort, how much should be the women, how much they should compare to the population growth, how much transgender should be there, how much 80 plus there. If transgenders are available in, or PWDs are available in a particular state through social justice department, we go and cross check कि उसके बराबर हमारे यहाँ आ गए कि नहीं आ गए. So electoral rolls purity is something which is our constitutional mandate, and we are very confident that we are doing it. Yeah, we'll take another round of questions. The gentleman at the last, followed by the lady over here in the middle. Yeah, the last row. Yeah, give it to him. The gentleman over there who's sitting behind you, right? Yeah, that one. सर, मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से. मेरा सवाल ये है कि फ्रीबीज को लेकर के आपने उसकी क्या परिभाषा रखी है, क्योंकि चुनाव के दौरान उसकी अलग परिभाषा है और चुनाव के बाद उसकी अलग परिभाषा है. Okay, the lady in the middle, please give her the mic. Someone just hand over the mic to her. Yeah, in the middle row. Yeah. No. Yeah. Okay. Thank you, sir. Arunima from CNN News 18. Here, sir. If you could clarify for Chhattisgarh, since it's two-phase, the entire Naxal-affected area of Bastar goes to polls in first phase. If you could just clarify that. Yeah, the gentleman here in the middle row. The southern part goes to the poll in first phase. The part which is adjoining the Madhya Pradesh and to the northern side goes in the second phase. Yeah. मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से. पोस्टल बैलेट को लेकर आपने इम्पोर्टेंट बात आज कही है. क्या इस बात की शिकायत कई पॉलिटिकल पार्टी ने की, और क्या इन चुनावों में इसको लेकर धांधली हो रही थी, इसका दुरुपयोग हो रहा था, इसकी वजह से ये बदलाव किया गया है पोस्टल बैलेट में जो आपने कहा है अभी हाल में? The lady over there.
in the fourth row, yeah. Question is related to Jammu and Kashmir Assembly elections. It's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls. What is holding up the Election Commission in announcing these polls? And have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? I'm Bharti Jain from the Times of India. Thank you. Yeah, second row, or left. That's Yeah. the last. That's the last one, yeah. सर मैं अरविंद हूं दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है फ्रीवीज से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में फ्रीवीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बड़ी तेजी से बढ़ी है, इसको आयोग किस तरीके से देख रहा है और इस पर क्या कुछ अंकुश लगाने की भी जरूरत समझता है? Yeah, I think that's the last. That will be the last one. सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक लीडर ने कहा कि अगर अपने अपोजिट पार्टी के बारे में कि अगर उस पार्टी को वहाँ से 0 वोट मिलेगा तो मैं उस बूथ के इंचार्ज को 51,000 रुपये दूंगा। तो क्या इस तरह की जो गतिविधि है उसको आप किस तरह से लेते हैं और इसका कैसे निवारण करेंगे? Thank you. 3 questions: postal ballot, J&K and freebies, and that's the last. Postal ballot का दुरुपयोग we will not say, but postal ballot, voters using postal ballots becoming a force and a interest group and deciding after the poll as to where to cast the vote was not perceived, was not the right practice. जब पोलिंग हो गई उसके बाद एक असेसमेंट करिए कि क्या मार्जिन्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टल बैलेट वाले मिलके एक बार्गेन शुरू कर दें, सो उनके अपने कुछ भी इंटरेस्ट बहुत जगह में होते हैं, वो कर दें, तो दैट वाज नॉट जायज़, एंड दे एवरीबडी मस्ट, यू हैव ए फैसिलिटी, यू मस्ट डू इट देयर, सो दैट इज वन. J&K के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करें. फ्रीबीज के बारे में जैसे आपने कहा कि किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, तो पता नहीं क्यों 5 साल याद नहीं आती, लास्ट में ही महीने 15 दिन में सारे अनाउंसमेंट्स की याद आती है. बट एनीवे, दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. बट आपको जैसे अवगत होगा, कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी, एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन. इट इज अवेलेबल हियर ऑल्सो. इफ यू कैन सी, you can read it on the website of the commission. ये क्या कहता है? ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.